हेलो एवरीवन। आज हम लोग साउंड्स ऑफ इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। द 44 साउंड्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 44 साउंड्स होता है जो हम लोग आज डिटेल्स में सीखेंगे। फैक्ट्स ऑन लेटर्स एंड साउंड्स। लेटर्स आर रिटेन, साउंड्स आर स्पोकन। When we write, we use the writing spelling alphabet, which consists of 26 letters. When we speak, we use the speaking phonetic alphabet, which consists of 44 sounds. There are 44 sounds in English, which are called into three, namely: first, vowel sounds; consonant sounds; diphthongs. अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अल्फ़ाबेट लेटर्स 26 लेटर्स और 44 साउंड्स होता है। वॉवेल्स 5 लेटर्स होता है और 20 साउंड्स होता है। प्योर वॉवेल्स 12 साउंड्स है, जबकि डिफ्थॉन्ग्स 8 साउंड्स हैं। लॉन्ग साउंड्स ऑफ वॉवेल 5 साउंड्स, शॉर्ट साउंड्स 7 साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स 21 लेटर्स और 24 साउंड्स। Voiced sounds of consonants 15 sounds, voiceless sounds of consonant 9 sounds. हेलो एवरीवन। इसमें अब हम भावल सीखते हैं। भावेल क्या है? ए साउंड वी मेक व्हेन द ब्रेथ फ्लो आउट थ्रू द माउथ फ्रीली विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड. The English letters A, E, I, O, U are called vowels because they represent such sounds. अब हम लोग consonant देखते हैं। A sound we make that is not a vowel. The English letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U नहीं V, X, Z and usually W and Y are called consonants. The breath is somehow blocked on its way out of the mouth. There are 24 consonant sounds in English, divided into two types of consonant sounds. Voice sounds 15 sounds, voiceless sound 9 sounds. Consonant 21 letters, 24 sounds.